Hello everyone. Welcome to the live of the bridge. हम बहुत टाइम बाद आए and this time we'll be covering a new sport which is Kho Kho. So hope you enjoy this one. Hello Brijesh. Hello. So as we all know कि एक हफ्ते से अल्टीमेट खो खो चालू है. There has been lot of action in a new sport. हमने पहले देखा था कि बैडमिंटन की लीग आई थी after IPL started in India. Cricket providing the boom for IPL's start. IPL अब तक चले जा रहा है and then we had badminton coming in. Kabaddi PKL which has become very famous. Recently वॉलीबॉल शुरू हुआ. नाउ वी हैव अल्टीमेट खो खो. सो खो खो भी अभी एक लीग फॉर्मेट एक्सप्लोर करने गया है एंड whatever I have watched, I found the sport to be very exciting, and this league format has made it even more exciting. मतलब उन्होंने कोई रूल्स चेंज किए लाइक ट्रेडिशनल खो खो पे जो रूल्स डिफाइन होते हैं तो वहां से थोड़े रूल्स चेंज किए सो दैट दैट हैज बीन शिफ्टेड टू मेक द स्पोर्ट मोर एंड मोर एक्साइटिंग फॉर पीपल टू वॉच एंड आई विल बी गोइंग ऑन अबाउट खो खो's history, current status of the sport, and what ultimate खो खो is, what are the rules, so that आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जब आप नेक्स्ट टाइम ये स्पोर्ट देखें. And we have Yuvraj Gupta in the chat. Welcome Yuvraj, and thank you for those who have joined us, and hope you enjoy this live stream. And you can interact with us, you can ask us questions about each and every sport, any sport you want to. And Agastya is here. Have been following Coco League, but do give updates about BWF. Agastya, we'll be doing BWF live streams tomorrow. तो कल से हम BWF के मैचेस स्ट्रीम करने वाले हैं. लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, प्रणय, all of them have won their matches, and I guess most of them, all of them will be playing tomorrow. तो बैडमिंटन भी हम BWF कल से कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं as the matches get more and more interesting. So we'll be doing BWF also, and yeah, a lot of action coming up there. But today we'll start with Kho Kho. Brijesh is saying when I heard power play rule, I was like नाम तो कुछ different रख लेते because power play means हाँ मतलब हाँ power play का इधर in Kho Kho league there is a concept. I'll come to that कि Kho Kho league में power play क्या होता है, and it is also indicated by the same hand rotation which is done in cricket. तो yep. You are asking will you cover US Open? Indian athletes won't be participating there, तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी. But we have a pro tennis league coming up. इंडिया में pro tennis league होने वाला है, तो we'll definitely try that. Because हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स के लीग्स हो रहे हैं, they have been very interesting. Devesh Kumar Rai is here. Welcome Devesh. So I'll start with Kho Kho. तो शुरू कर देते हैं. Let's have the history of Kho Kho first. Yeah. So, Kho Kho is believed to have been originated in the Maharashtra region of India. महाभारत जो है एपिक है उसमें भी काफी रेफरेंसेस है. और अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इट इज सेड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र रीजन. और पहले इसे रथेरा कहा जाता था बिकॉज इट वाज प्लेड ऑन चैरियट्स, जो कि विच ट्रांसलेट्स टू रथ, तो इसलिए उसका नाम ये भी था. एंड पुणे में जो डेक्कन जिम खाना करके नाउ ऑल्सो देयर हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग पूल, स्नूकर एंड ऑल. तो डेक्कन जिम खाना में आई थिंक 1920 में खो खो के फर्स्ट फॉर्मलाइज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे. तो ये हुआ था. एंड इंडियाज फर्स्ट ऑल इंडिया चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विजयवाड़ा इन 1950-60 एंड women's national championship was held in 60-61. So that had happened, like the history of the sport is this. I'll come to Kho Kho at the international stage, but we have people in the chat. So hi Tabish, welcome back from the CWG stream. Yuvraj is saying please cover tennis also, Rohan Bopana and Ramakumar Ramanthan and many more. Definitely Yuvraj, if we have Indian presence at the US Open, I'll definitely try to cover that. So yeah, and we also follow the pro tennis league. But yeah, if we have doubles and singles player there, we'll definitely try to stream. So this was the history of Kho Kho. Now we'll move on to Kho Kho at the international stage. So Kho Kho was demonstrated at the 1936 Berlin Olympics, जो कि जर्मनी में हुए थे. along with other indigenous sports, कबड्डी, मलखम, इनका भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था. और ये 1982 एशियन गेम्स जो कि दिल्ली में हुए थे तभी भी खो खो एक डेमो स्पोर्ट था.
बट इसका एक फर्स्ट एवर एशियन चैंपियनशिप्स ये 1996 में कंडक्ट हुए थे, एंड खो खो बिकेम अ मेडल स्पोर्ट एट द साउथ एशियन गेम्स 2016 which was held in Guwahati. तो खो खो हैज खो खो मतलब from Indian All India Championships in 1960 to Asian Championship, South Asian Games, it has come a long way. And मुझे लगता है कि इस लीग से जैसे कबड्डी को प्रो कबड्डी लीग से इतना एक्सपोजर मिला, देयर आर चांसेस दैट खो खो's एक्सपोजर विल इंक्रीज अ लॉट, बिकॉज जो डायनामिक लीग है ये, इसका जो है फॉर्मेट, इट्स वेरी नाइस. And Tabish is asking, not covering BWF. We'll cover BWF. We had डन अ स्ट्रीम लास्ट वीक रिगार्डिंग द ड्रॉस, तो हम आगे भी मतलब कल से मैचेस कवर करना शुरू करेंगे. couldn't do it for the past couple of days for some reasons, but कल से the coverage will start. And do you think India will go on to become a powerhouse in Kho Kho just like how it was for Kabaddi, says Pranjali? Pranjali, India is a powerhouse in Kho Kho. Like we are like this is the Indian game essentially, like Kabaddi is. So I'm just hoping this is not crucial for us right now. Like being a powerhouse in Kho Kho, what is crucial is कि uh, खो खो दुनिया में अलग अलग कोने तक पहुंचे, कि 50 100 nations. So currently around 25 teams have Kho Kho, like they participate in Kho Kho competitions, and hopefully we'll have Kho Kho in the Asian Games soon, and hopefully it expands to Europe and other continents. Let's see if it happens or not. And now we'll move on to Ultimate Kho Kho, the league we are all here to talk about. तो सीजन 1 है इस लीग का. 6 फ्रेंचाइजी, चेन्नई क्विक गन्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई खिलाड़ी, ओडिशा जगरनॉट्स, राजस्थान वॉरियर्स एंड तेलुगु योद्धास. तो इसमें से जो ओडिशा जगरनॉट्स का टीम है, देयर इज अ नाइस ट्रिविया अबाउट द नेम ऑफ द टीम. यू विल थिंकिंग व्हाई ओडिशा जगरनॉट्स. सो जगरनॉट जो एक इंग्लिश वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जगन्नाथ. तो जगन्नाथ पुरी का जो टेम्पल है ओडिशा में, सो द वर्ड Juggernaut in English comes from Jagannath, and that's why this team is also known as Odisha Juggernauts. Like it, literally in English, it means ki a huge rolling force of some kind, which is the Rath Yatra. तो उसके वजह से ये नाम दिया गया है. और लोकेशन, दिस लीग इज बिन हेल्ड इन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विच इज इन पुणे. सो सारे मैचेस यही होंगे पुणे में. And we have some comments. Yuvraj is saying, I think Kho Kho is on Kabaddi's footsteps, but why there are many less countries competition in both sport? India Kabaddi team. Yeah, Yuvraj. So Kabaddi is still, I think, an Asian sport, because recently Iran defeated India. South Korea has been doing quite well. They won the silver. तो हाँ, कबड्डी को भी थोड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंटल जाना पड़ेगा फॉर एक्सपोजर टू, लाइक मोर एक्सपोजर. एंड we have AVC to, मतलब बहुत बड़ा नाम है, but anyways, there's he that person is saying there's an anime based on kabaddi named Kabaddi. Thank you so much for that. We love like this kind of trivias. Gujarat Titans is the same team from PKR, or it has different owners? Gujarat, I think Agastya is talking about Gujarat Giants. uh, I haven't checked the owners, but हाँ, logo same है. Like Kabaddi में it's Gujarat Fortune Giants. It was like when the team came out, and now here it's Gujarat with the same logo apparent. So yeah, must be the same owners. तो हाँ, तो Ultimate Kho Kho League. Let's move on. So I'll tell you a bit about how Kho Kho functions and why Ultimate Kho Kho has different rules than this. So to understand why both the league format and the traditional format are different, let's take a look at the some highlight videos that we have also posted on our channel, and like I'll go step by step here, क्योंकि थोड़ा सा complicated है. ये गेम नया है काफी सारे लोगों के लिए, because even I didn't used to follow Kho Kho much, and now I have been doing it. तो एसेंशियली 6 फ्रेंचाइजीज है जैसे मैंने आपको बताया, एंड इन 6 फ्रेंचाइजीज ईच फ्रेंचाइजी विल प्ले अगेंस्ट अ टीम ट्वाइस. तो आपस में दो दो मैच होएंगे. दिस विल बी द लीग स्टेज, एंड एट द एंड ऑफ लीग स्टेज विल बी हैविंग 4 teams in the playoffs, and these 4 teams will fight it out in an IPL style format. तो first
वर्सेस सेकंड का पहला मैच होगा प्ले ऑफ वन, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा. देन देयर विल बी एलिमिनेटर थर्ड और फोर्थ में. द टीम विच विंस इन एलिमिनेटर विल प्ले अगेंस्ट द टीम दैट लूजेस इन प्ले ऑफ वन, and the winner will go into the final. So that will be the knockout stage after the league stage is done and the top four teams are decided. And iske like ye ho gaya competition format. Now we'll go on to each and every match format. So another correlation between Kho Kho and cricket ki each match has two innings, but here innings are different. So to understand what an innings is, तो मैच में दो इनिंग होती है, बट इनिंग में दो टर्न्स होते हैं. ठीक है, तो टीम्स डिफेंड ट्वाइस एंड अटैक ट्वाइस. तो एक इनिंग्स में दो टर्न्स होते हैं. एंड मतलब अभी सोचो कि फर्स्ट इनिंग है, सो वी हैव अ टीम डिफेंडिंग एंड वी हैव अ टीम अटैकिंग. तो लेट्स प्ले अ वीडियो. लेट्स प्ले द वीडियो बिट सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. We'll just play a video in the second. Till then, we have a user asking, is there a Kho Kho World Championship? There's a Kho Kho Asian Championship. As I mentioned, कि Kho Kho में सारे जो participants है, the nations, they are Asian. So we have Asian. I'm not aware of any World Championships till now. So yeah, we have Asian Championships in Kho Kho. Brijesh is telling it is very endurance taking game comparing to Kabaddi. Tell it with my personal experience playing both Kabaddi and Kho Kho. तो ब्रिजेश अभी हर एक गेम का एक डायनामिक होता है. हियर वी हैव खो खो, जहाँ पे आपको रनिंग एंड्योरेंस बहुत ज्यादा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. कबड्डी में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू नीड स्ट्रेंथ इन कबड्डी. सो हियर इट्स मोर अबाउट एंड्योरेंस एंड रनिंग स्किल्स एंड डॉजिंग स्किल्स. कबड्डी इट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ. सो जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो खो खो में इतनी रिक्वायर्ड नहीं जितनी कबड्डी में. लाइक यू नीड टू हैव दोस मसल्स इन ऑल द राइट प्लेसेस, लाइक अपर बॉडी लोअर बॉडी मसल्स कबड्डी में काफी स्ट्रांग चाहिए. खो खो में यू सी द प्लेयर्स आर बिट ऑन द लीनर साइड, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ ग्रेट एंड्योरेंस, लाइक एंड्योरेंस रनिंग हम जिसे बोल सकते हैं. So yeah, there is a short difference between that. So let's have the video now. Yeah, so this is just a short highlight so that I can explain you what is happening. Okay, so the team in the blue. Okay, so the team in the blue is essentially attacking. तो ये जो भी आप लोग देख रहे हैं blue team में, they are attacking, and the other team, the team in the white, they have to defend. So that's the basic, like very basic rule of Kho Kho. And at the start of the game, there will be 4 batches. ठीक है, तो 15 लोगों की एक खो खो टीम होती है और उसमें से 12 लोग डिफेंड करने जाते हैं. ठीक है, एंड दीज 12 पीपल कम इन बैचेस ऑफ 3 ईच. तो 3 3 3 करके ऐसे 4 बैच टोटल आएंगे. तो समझो कि एक बैच 3 लोगों का आ गया. अभी सामने तो ये नीचे अटैकर बैठे हैं, तो द अटैकर्स जॉब इज टू टच द ओपोनेंट. सो दे हैव टू टच देयर ओपोनेंट्स एंड सो दैट they'll go out. तो समझो 3 लोग आए हैं, एक को आपने टच करके आउट कर दिया, दूसरे को टच करके आउट कर दिया, तीसरा होने के बाद ये बैच खत्म हो जाएगा. So once this batch is over, then we have a break, a short break of 30 seconds, and then the next batch comes. तो जैसे मैंने पहले बताया था, innings consist of 2 turns जो 7-7 मिनट के होते हैं. And after these 2 turns, we have, or in case of all out कि पहले ही सारे 12 players all out कर दिए attacking team ने, तो फिर हम second innings पे जाएंगे. तो let's have the video again. Okay, so as you can see here, हाँ, so this move that the person in blue did is known as a pole dive, क्योंकि कबड्डी में you have poles at both ends, and this pole dive is used to get the opponent out. तो ये जो आपने देखा ये pole dive था. तो normally while attacking, अगर आप एक टच करते हो, एक प्लेयर को आउट करते हो, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं. बट ये पोल डाइव जब आप करते हो या स्काई डाइव करते हो, सो विल ऑल्सो शो स्काई डाइव इन सम टाइम, तो देन यू गेट 3 पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 2. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट सिस्टम फॉर अटैकिंग. एंड वाइल यू आर डिफेंडिंग, समझो आप बैच में से 3 में से प्लेयर गए हो, एंड वन बैच, अ बैच ऑफ 3 सर्वाइव्स फॉर, हाँ ये स्काई डाइव है, ये डबल स्काई डाइव है. यस, सो दिस विल फेच यू 3 पॉइंट्स, दिस एंड पोल डाइव. बाकी आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे. सो दिस इज नोन एज द स्काई डाइव,
and this will fetch 3 points for the attacking team. एंड अगर आप डिफेंडिंग टीम है तो एक बैच आपका मतलब 3 लोगों का बैच है, समझो पहले 3 प्लेयर है, फिर 2 प्लेयर, फिर 1 प्लेयर. सो देन दिस वाज अनदर स्काई डाइव, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट मिलेंगे. हाँ, एज यू कैन सी, अगर ये नॉर्मल आउट करते तो इन्हें सिर्फ 2 पॉइंट मिलते थे, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर पॉइंट्स एज मच एज यू वांट. तो मैक्सिमम पॉइंट्स एक अटैकिंग टीम ले सकती है, वो 12 into 3 36 होता है. एंड व्हेन यू आर अ डिफेंडिंग टीम, अगर 2.5 मिनट आपने गुजारे एक बैच ने, तो 2 पॉइंट मिलते हैं डिफेंडिंग टीम को, विच आर वेरी क्रूशियल. डिफेंडिंग पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल, यू गेट 2 पॉइंट्स. एंड उसके बाद हर 30 सेकेंड इंक्रीमेंट में और 2-2 पॉइंट मिलते जाते हैं. तो ये जो 2.5 मिनट का पैच होता है, इसे ड्रीम रन कहा जाता है. एंड इट इज वेरी रेयर, लाइक in Kho Kho, to see a dream run is very rare in Ultimate Kho Kho. So whenever the opponent sends their best batch, कि बेस्ट 3 प्लेयर का जो भेजेंगे वो लोग, तो जो अटैकिंग टीम है, जो लोग बैठे हुए आप देख सकते हो, विल गो बैक अ बिट. हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो लोग बैठे हुए उसमें व्हाइट कलर की जर्सी तो पहनी है, पर एक प्लेयर ने अलग कलर की जर्सी पहनी है. सो दैट प्लेयर इज नोन एज अ वजीर. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वजीर इन खो खो. तो हमने देखा है कि वजीर चेस में यूज होता है, बट इन वजीर इन अल्टीमेट खो खो इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे समझो पावर प्ले लिया जाता है. तो पावर प्ले इन खो खो इज कि ये जो टीम अटैक कर रही है, दे कैन हैव 2 वजीर्स, ओके. एंड व्हाट अ वजीर कैन डू इज, अभी समझो एक कोई नॉर्मल प्लेयर अटैक करने गया, एंड ही मूव्स इन द राइट डायरेक्शन. ही हैज टू मूव इन दैट राइट डायरेक्शन. व्हेन ही चेंजेस डायरेक्शन, that's not allowed, that's a clear foul. So he has to go in that direction only. But what a wazir can do is, so if a wazir goes out, he can move in both right directions and left directions. He cannot cross the lines, the right or ये center line cross नहीं कर सकते, but he can go in the right and left direction on the same side of the court. तो इसीलिए वजीर का होना बहुत important है. And that's why in power play, the attacking team has 2 wazirs instead of one. So normal time में they can have one wazir, but during this power play stage they have 2 wazirs. And the uh, like it's better for them during the power play stage. So that wazir and power play are two interesting concepts in ultimate Kho Kho. And there are little bit differences which can be seen in traditional and ultimate Kho Kho, कि मैट डायमेंशंस जो है उसमें थोड़ा सा अलग है. मतलब 27 into 16 मीटर की जो मैट होती है रेगुलर में, उसे कम करके 5 मीटर कम करके 22 into 16 बना दिया है. सो दैट the game is like, we can again compare it with cricket, because shorter format of the game, T20 from ODIs and tests, to ignite people's interest. So to make the game shorter and more interesting and favorable for the attackers instead of the defenders, मैच साइज छोटी की गई है. और जहां पे ये अटैकर्स बैठते हैं, उस ब्लॉक को 35 into 30 सेंटीमीटर्स के बदले 40 into 40 कर दिया है, सो दैट it's easier for them. So the game has been made more and more attacker friendly. तो ऐसा है. एंड as I said, 2 points are awarded on a very simple touch, and you get 1 bonus point for effecting either a pole dive or a skydive, and 3 is the maximum points then. And also if the opponent surrenders, like if the opponent goes out of the field, etc., then they get 3 points, the attacking team. And for the defending team, very crucial points, dream run agar karna ho to 2.5 minute, 2 minutes 30 seconds, you have to be, the whole batch has to be there, and you get 2 points for that. और हर 30 सेकंड के इंक्रीमेंट पे पॉइंट्स मिले जाते हैं. सो दैट्स द होल पॉइंट सिस्टम इन खो खो. अगर बाकी रूल्स की बात करें तो इट्स वेरी लाइक ट्रेडिशनल खो खो ओनली. जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वजीर डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए वजीर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरी एक चीज आप देखेंगे कि खो खो में खो कैसे देना है, कि यू कांट शाउट खो एंड देन पैट ऑन द पर्सन्स बैक. यू हैव टू फर्स्ट पैट एंड देन से खो खो. तो पहले टच करना है अपने टीममेट को और फिर खो बोलना है, और एल्स यू विल बी गिवन अ फाउल. एंड दिस पोल डाइव इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन खो खो. सी, यू कैन सी. हाँ, so pole dive is the very, because you have, instead of crossing the whole pole, आप
अपने कोर्ट में ही हो, बट विद दैट डाइव यू आर एबल टू इफेक्ट एन आउट, यू आर एबल टू इफेक्ट अ टच. तो दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन खो खो. हाँ, दिस इज अ पोल डाइव. और ये जो प्लेयर आपने देखा वो वजीर था, जिन्होंने अलग जर्सी पहनी हुई है. वॉलीबॉल में आप देखते हैं तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर में से एक प्लेयर लिबेरो होता है, who wears a different colored jersey. Here we have in Kho Kho we have Vazir, who wears a different colored jersey. और पावर प्ले में जैसे मैंने बताया पहले कि दो वजीर होते हैं. Ambarish is here. He says, Naman bhai, hello. Welcome, Ambarish. Welcome back. Good to have you here. So we are telling people about Kho Kho and Ultimate Kho Kho. Yeah. So these are different rules about Kho Kho, and like to go into more details, I'll just tell you what these things mean. तो आप ये जो line बीच में देख रहे हैं, we'll just go back to it. Amber is saying इस सीजन से कोको देखने लगे, quite interesting. Yeah, it's super interesting. So you can see the line in the middle. It's known as the center line. और उसे जो क्रॉस कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो दे आर नोन एज द क्रॉस लाइंस. जो पोल देख रहे हैं आप, पोल के बाहर का जो एरिया है, एक बॉक्स है, उसे फ्री जोन कहा जाता है. तो वहां से कोई भी अटैकर या डिफेंडर, अटैकर जो है वो घूम घूम सकते हैं. And that's, yeah, Ambarish has said ki it took time for him to understand. Yep, Kho Kho is not a very easy sport to understand. Like any sport, आपको ध्यान से उसके रूल्स पढ़ने होंगे, ध्यान से वो गेम फॉलो करना होगा टू गेट अ ग्रिप ऑन व्हाट द रूल्स आर, फाउल कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते. बट टुडे लाइक माय बेसिक एम वाज टू लेट यू पीपल नो कि होता क्या है, लाइक व्हाट खो खो एग्जैक्टली इज, and why Ultimate Coco is so interesting to watch, essentially. So, if you people have any queries, any questions, please ask me. I'll be happy to entertain you guys. So, if you have any questions, please let me know. Majar Jamdar's double score was awesome. Yes, Majar has done great. I mean, his team has not fared very well. राजस्थान की जो टीम है, like ये बहुत weird है, क्योंकि आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, and now Rajasthan has not been doing well. But हाँ, we saw the video that we used for representation purposes. We saw कि उन्होंने एक डबल स्काई डाइव लगा के 6 पॉइंट लिए एक ही मूव में. So yes, that was pretty impressive. कबड्डी में हम डुबकी करके एक इंटरेस्टिंग मूव देखते हैं, और यहाँ पे जो स्काई डाइव्स एंड पोल डाइव्स, दे हैव कंप्लीटली चेंज द गेम, चेंज द वे लाइक हाउ खो खो इज प्लेड. There is something like all out in Kho Kho, like all out in Kabaddi. So Agastya, it's like a wipe out. So अगर समझो टर्न्स खत्म, तो 7 मिनट का टर्न है और 2 टर्न है एक इनिंग्स में. तो अगर 14 मिनट्स तक सामने वाले 4 बैच नहीं टिक पाए, लाइक लेट्स से ऑल 4 बैचेस लो, 3-3 लोगों के 4 बैच है, ऑल ऑफ देम आर आउट इन से 10 मिनट्स, तो दैट्स अ वाइप आउट. लाइक तब तक टर्न टर्न खत्म होने तक रुकना भी नहीं है, तो अपोनेंट को इतने पॉइंट मिल जाते हैं. एंड Vithi is asking, Naman, is the haircut that bad? Yeah, I had a haircut today, so that's why I'm wearing a cap. Like मैं हूँ ऐसे नमन, but today I'm like pretty on the chaman side of things. So yeah, back to Kho Kho. We have Busy is asking, he is very happy with this ultimate Kho Kho. Yeah, Kabaddi and Kho Kho are indigenous and grassroots games of a country, and even I am very happy with the way things have panned out, because मैं भी पहले खो खो इतना फॉलो नहीं करता था. महाराष्ट्र में खो खो का बहुत ज्यादा टैलेंट है, एज यू कैन सी इन अल्टीमेट खो खो ऑल्सो. लाइक आई हैव सीन quite some matches in various parts of Maharashtra, but I never followed that sport very closely. Now because of Kho Kho League, एक जो डायनामिक फॉर्म अपना है इस गेम ने, it has been super interesting to watch, and let's hope this continues. And that's what we're trying to tell people कि आप एक बार scores like rules वगैरह समझ लो, then you will have a good and decent idea of how the game is played. So if we have any more queries, please ask them.
Also, for those who are asking about badminton world championships, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के कल 3 सिंगल्स मैच हो गए मेन सिंगल्स एंड विल बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑल ऑफ देम लक्ष्य सेन प्रणॉय एंड किदाम्बी श्रीकांत सो is this game played internationally? Ambarish is asking. Yes, we have Asian Championships of Kho Kho. हम ये sport South Asian games में भी देखते हैं, which of course India has dominated. We defeated and won the gold. तो we there are around 25 nations competing in Kho Kho internationally, and like Kabaddi, it has not yet moved out of Asia per se, but hopefully ये भी हो जाएगा जल्दी. We'll have Kho Kho expanding to more and more countries around the world. We need this because this is a very exciting game. Like we see uh, some games that are not exciting and have worldwide coverage, but Kho Kho being a very exciting game, very dynamic and quick game, should get more and more coverage. Yep. So Gurvinder Gomez is also back in the chat. We have Agastya. Sai Pranit lost. He looked sharp after a very long time. Still some hopes left. Let's see, man. I mean, we already have three very high quality players right now. Something we did not have over the past decade. One of the reasons हम Thomas Cup क्यों जीते हैं. But yeah, badminton discussions, BWF live coverage will be starting tomorrow. And national teams के player कितने खेल रहे हैं खो खो लीग में? Ambarish, I think almost everyone is competing in Kho Kho League, the Ultimate Kho Kho League, and like it's the only premier competition they have right now. And leagues are also a good way to support them financially. So yes, our national team players are competing. Lot of others from the grassroots, young people. हम देख रहे 20-year-olds from Indian national team, they are doing very well. और जो leading points tally है उसमें जो वजीर रहते हैं, as I mentioned, the wazir position, they have more points because they have more advantage while attacking. And Viti is saying we have Neeraj on Friday. Yeah, Neeraj in Diamond League. So Neeraj Chopra will be competing in Diamond League after a injury hamstring scare. So Diamond League साल भर चलता है. Different cities we have Diamond League. So Neeraj Chopra will be back in action after missing the Commonwealth Games. So that is happening. BWF is happening. We also have the नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29th अगस्त. तो हम उसी दिन भी स्ट्रीम करेंगे. लाइक विल ट्राई टू कवर व्हाट हैज हैपेंड. So I'll have a quick update on Neeraj Chopra to see what the official sources are saying. Neeraj has confirmed participation in Lausanne Diamond League. So this will be happening in Switzerland. So Neeraj has confirmed participation, and it will be a very interesting competition to see because Diamond League में top competitors participate करते हैं. Recently, European champion, the person who became European champion, which is Julian Weber. तो Julian Weber भी होंगे. और I don't know about Arshad Nadeem because Arshad Nadeem had an injury in CWG. If he's there, like Arshad Nadeem, Anderson Peters, Julian Weber, Yakub Wadlej, Neeraj, Keshawn Wolcott, अगर ये सारे players होंगे Diamond League में तो it will be a great competition to watch. So let's hope that happens. And Murli Sri Shankar has still some way to go in the Diamond League as far as things are concerned because the Greek is very consistent. But let's see what happens in Diamond League. We'll wrap up this stream in in a couple of minutes. If you don't have any questions, we'll stop. If you have, please let us know, and suggestions, of course. Okay, so thank you so much for joining. Hope you understood about Kho Kho, the history of Kho Kho, and basic rules of how the ultimate Kho Kho league is played and what is happening right now. And
Let's meet tomorrow for badminton BWF World Championships. And of course, Agastya's suggestion will also try to include US Open. तो जितने इवेंट आएंगे प्लीज हमें सजेस्ट करते रहना. We'll try to do our best and cover all of them. And yeah, Diamond League BWF Championships coming up from tomorrow. So don't forget, and please watch the Ultimate Kho Kho League. It's a very interesting sport. Yeah, Pranjali, we will definitely try that, and we also do that on our different channels. Yep.